Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my project presentation of software project management. My name is Abdul Hadeed, Sabadi 11061. My other group member is Najeeb Tahir 21074. Our tool discussion of project management is uh, Active Collab. We will discuss further uh, on detail and more than relate with the topics of the semester we have learned during 4 months. Active Collab. Active Collab is a project management software that helps team collaborate, plan, track progress, and deliver project efficiently. Active Collab जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है जो कि मदद करता है टीम की कम्युनिकेशंस के लिए और इन टीम कोलैबोरेट करने के लिए ये इसके अंदर हम स्टेक टूल्स के अंदर स्टेक होल्डर्स को भी ऐड कर सकते हैं। देन फर्दर प्लान करने के लिए हम रिक्वायरमेंट लेके एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकते हैं और उनके साथ फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं, रेव्यू ले सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज ट्रैक प्रोग्रेस। हम जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली। It provides a centralized platform for managing tasks, deadlines, resources and communication within a project team. ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो कि जिससे हम मैनेज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, टास्क को, एक्टिविटीज को और उनकी डेडलाइंस को। जो हमने एक एस्टिमेट रखा होता है इस टाइम पे ये प्रोजेक्ट करना है। Other one is resources and communication within a project team. We can also manage resources utilizations. Which resources are used like cost, time, etc. And communication of the stakeholders with the manager and the teams to understand better. Active Collab offers a wide range of features functionality to streamline project management processes and enhance team collaborations. The features of the Active Collab is work management, team collaboration, time management, source management, business profitability, app integrations, and estimations and invoices. And these are many features in this work management. Active Cloud provide project base and task base and activity base. And in the team collaboration feature, Active Cloud provide in-app chats, discussions, notes, and in the time management, this provide Stowwash, timesheet, team timesheet, and time reporting. In the resource management, tools provide people's we can add clients and employees and stakeholders to discuss properly and availability and workloads manage. In this slide we will discuss about how the tool Active Collab for project management give values and deliver how this system value delivered to the end users and the stakeholders and or project managers. The first one is uh, more uses task management. This allow to assign tasks to team members, set deadlines, and track progress. As yeah, this help to organize, prioritize, complete on time. This completely deliver value. And the next one is collaboration communication. When we add members and they will comment us, file share notification, then exchange feedback with the stakeholders. Then it is a very efficient way to for the project workflow and protect from the changing after build. Time tracking and resource allocations. There are features of in Active Lab like time tracking. The each client or employee spend time on project. We can add like uh, integrate other third-party tools for the time tracking. As we this screenshot shows, this is the requirement process in the Active Lab tool. This is the project, uh, and
Here is the task. It is applied. The people who applied here for the job. Next one is for example, I am Acha. Then I will call the applied person to the phone interview. Then I will uh, principal says that you have a stewardship, but in active grab, this is a personal thing and no such feature in the tool. And a principal says you have a collaborative team environment, but in the uh, Agricultural app this provide real-time and communication and progress. We can monitor, measure, and analytics reports. The another one is stakeholder principle. This says from the PM book, effectively engage with stakeholders. We can, as shown here, is the web design project task. Where it is the to do, doing, and a client reviewers. We can add client, and then he will engage with us. This is the best feature. We add client, then he will give feedback, then we will engage in role in the active collab. The next principle is focus on value. Uh, uh, no such feature in the active collab tool, but we can watch helpers and chatbots. The next feature principle is system thinking. System thinking says you can recognize, react, and respond to system interactions. Uh, for this, we can monitor progress the system and position determined by manager how much work done. And the next one is leadership principle. Leadership, which is you have demonstrate leadership behavior. Uh, it it is the personal quality, not a feature. The next one is tailoring. Tailoring principles is based on context. We will further watch on the next slides of the tailoring. Tailoring mean active collab provide customizable in task and other communication and other features. The next principle is quality, build quality into process and deliverables. But active collab have no such quality, but provide better use for the engage of users and effective and efficient with the user with the less speed of the pages and track information easily with the breadcrumbs. The next principle is complexity. Navigate complexity. Provide as a project manager, you have a navigate. You have navigate complexity. PM book principle says, but in the active lab, uh, provide as a project manager, support workflows, track team, and organized. uh, it is a good feature of. Then other is this principle. uh, Optimize risk responses. In the actual lab we can optimize through the Gantt charts and the Kanban boards. We can check the target budget and cost, workflows, and income. Adaptability and resiliency managed by the herd manager can overcome and remove the hurdles. The next last principle is change. Enable change to achieve the envisioned future state. In the Strict Lab, provide check history of changes in the project. Tailoring in Active Collab. Active Collab provide a flexible platform that you allow to tailor your project management processes. The first one is customer flows, task customization, project delays, permission access control, custom reporting. For the uh, for, for the suitable and we can modify for the flexibility and for our needs we can change in our project. uh, Project performance in active collab. The first one is stakeholders.
Stakeholders active collaboration allow you to manage define and manage stakeholder for each project. So we can add stakeholder as project members, assign role and function. The next is team active features for team collaboration. We can share files and we can uh, we can track their work. The third one is this will provide customized project template to align with specific methodologies like Agile, Waterfall, etc. The next is planning project for delivery, measurement, and certainty. Planning says active in active collab. Uh, we tools for the project plan include task creations, setting the deadlines, priorities, and allocate our resources. In the project works uh, designed to facilitate project execution and task management. We can create tasks to employees and clients. They can track progress of every team members. Delivery on time. We can set time. In the measurement, we can analytics and report to the resources and time tracking and other metrics of the budget income for the risk management issues. For the last one is uncertainty. We can tracking tasks and mitigate progress for monitoring progress for the, prevent from the mitigate uncertainties and make informed decisions. Model method and artifact in active collab. In model, active collab allow to create and implement various project management models within a tool. Whether we have traditional models like waterfall, scrum, agile, etc. We can based on the preferred and the which stakeholder is and the business logic behind. The next one is method. Method supports project method by providing a range of features and functionalities. This tool flexibility allow to perfect method with frameworks. And the last one is artifacts. And this facilitate the creation and management of project artifacts. Uh, and this shows us picture project task by user, team timeline, and project timeline. This shows the model methods and artifacts. In shared software project management with active collab, the first one is project planning, requirement gathering, then collaboration and communication. WS in active collab, as we show in the feature of first feature of the task management, we can divide the project into tasks into then task into activities. In the task hierarchy, we will break down into the smaller and smaller pieces, tasks and subtasks for the arrangement of the project and deliverables and divide the work to the team members. Task dependency allow to task uh, indicate the logical relationship between tasks. Assigning resources, we will assign resource to the team members who is responsible for completing specific work packages. Project resource management in active collab. It is first one is resource allocation. We will view in the availability of the workload and capacity within the tool and make decision about the resource allocation. The next one is workload management. We each member have equal work or we can track the workload through the as shown in the diagram. This diagram show is have the daily work and for the eight for example for 8 to 9 hours, then we can't assign 24 work daily. Then we can workload management check and divide to the other team member. The other is resource scheduling and resource availability and conflict and resource tracking and reporting. Through the activity, we can reschedule our resource and track and report to the uh,
team manager, project managers, roles and responsibility in active collab. User roles and permission. It is the very uh, good features in the active collab for the engage of stakeholders and uh, collaborate with the team members. We can create roles as a project management and add other users. This tool create new roles and responsibility for the project management. Then other is task assignment, notification reminders. This shows how we can add members like start project and we can add invoices and estimates or who can access this project. For example, I want to add just in web design, then send invitation when he will accept invitation, then automatically adds. Then further continue Anijit Tahir. I hope you will like and understand clearly. Thank you. अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ नजीब ताहिर और मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इस प्रेजेंटेशन को यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। सो माय फर्स्ट टॉपिक इज़ प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारे पास तमाम टीम रिसोर्सेज, तमाम फिजिकल रिसोर्सेज, तमाम हार्डवेयर रिसोर्सेज या या मटेरियल्स और इवन सॉफ्टवेयर जो वो तमाम इसमें शामिल होंगे। तो इसके लिए हम एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर उसको डिफ़ाइन करेंगे जो कि वेरीफाई करेगा शेड्यूल्स और कंफर्म करेगा रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को। तो इसके लिए हमें एक कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ टास्क या एक्टिविटीज़ को क्रिएट करने की ज़रूरत पेश आती है। तो एक्टिव कोलैब में हमारे पास एक्टिविटीज़ लिस्ट ये हमें प्रोवाइड करता है कि कौन-कौन सी एक्टिविटी किसको असाइन की गई है और उसके बारे में डिटेल हमें बताता है। और उसके अलावा हमें शेड्यूलिंग बताता है और अवेलेबिलिटी बताता है कि कौन-सा मेंबर किस दिन अवेलेबल है या नहीं है। और इसके बाद है टीम रिसोर्सेज। टीम रिसोर्सेज प्रोजेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट जो हो वो मल्टीपल टीम मेंबर्स पे जो है मुश्तमिल हो सकता है और हर एक मेंबर जो उसको टास्क असाइन किया जाता है उसके लिए ज़िम्मेदार होता है और टीम का जो एंड गोल है सबका वो एक एक कॉमन गोल होता है टू अचीव अ कॉमन गोल। उन सब का यही एक मकसद होता है। तो जो भी टास्क जिस बंदे को असाइन किया जाता है वो मुकम्मल तौर पर उसके बारे में ज़िम्मेदार होता है। तो एक्टिव कोलैब हमें ये फीचर देता है जिसमें हमारे पास ओनर आ जाते हैं, मेंबर आ जाते हैं, क्लाइंट्स आ जाते हैं और इनके बारे में हमें ये बताता है कि इनके क्या-क्या रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके बाद है प्रोजेक्ट एस्टिमेशन कॉस्ट वाइज़। इसमें हम साइज़, क्वालिटी या स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट या कॉस्ट उसको हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए असाइन कर रहे होते हैं। जो कि आई थिंक पर्सनली कि ये बहुत ही एक मुश्किल टास्क है क्योंकि अगर किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट का गलत अगर तख़मीना लगा दिया जाए, तो वो इस प्रोजेक्ट को तहस-नहस कर सकता है। सो एक्टिव कोलैब में अगर देखा जाए तो ये हमें एक कोटेशन जनरेट करके देता है ऑन द बेसिस ऑफ द इनपुट जिसमें हम देख सकते हैं अगर हमारे पास कोई टैक्स वगैरह है जैसे वैट जो कि यूके में मोस्टली होता है तो वो भी हमें ये एक कोटेशन में जनरेट करके हमें दिखा देता है। इसके बाद है प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टाइम वाइज़। इस प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टाइम वाइज़ को हम मल्टी पॉइंट फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ करके उसको उसको निकालते हैं। तो इसमें जो मोस्ट पॉपुलर फ़ॉर्मूला है वो है PERT यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्नीक। इसमें हमारे पास अगर यहाँ विंडो में देखा जाए तो हमारे पास 3 जो है वो आ जाती है। एक ऑप्टिमिस्टिक यानी मिनिमम, मोस्ट लाइकली यानी मॉडल और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 4 के साथ और पेसिमिस्टिक यानी मैक्सिमम और इन सब को होल डिवाइड किया जाता है 6 पे। तो हमारे पास प्रोजेक्ट एस्टिमेशन टाइम वाइज़ जो है वो निकल आती है। इसके बाद है एस्टिमेशन एस्टिमेटिंग वर्सेस बजटिंग। अब किसी भी प्रोजेक्ट को जैसे हमने उसकी क्वालिटी, साइज़, स्कोप
ये सारी चीज़ें हमने डिफ़ाइन कर दी। तो उसके बाद है हम उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जो वो उसको असाइन कर रहे होते हैं। तो उसके लिए एक्टिव कोलैब हमें 3 जो है वो इनपुट फ़ील्ड्स देता है, जिनमें 3 तरह के बजट जो वो इनपुट कर सकते हैं। इनमें है फ़िक्स, यानी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो बजट है वो फ़िक्स है, वो ऊपर-नीचे नहीं हो सकता। और दूसरा है टाइम एंड एक्सपेंस। ये इस तरह से है कि हम वक़्त के साथ-साथ जो वो बजट बजट देते जाएँगे, उसमें इज़ाफ़ा करते जाएँगे। और तीसरा है नॉन बिलिंग। ये नॉन बिलिंग जो मोस्टली विदिन इन ऑर्गनाइज़ेशन यूज़ होता है। तो इस विंडो में भी हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास है प्रोजेक्ट वेब डिज़ाइन का, तो बैकएंड के लिए भी हमने कुछ रकम मुख्तस की है, डिज़ाइन के लिए, एडिटिंग, फ्रंट एंड, इन सब के लिए हमने अलग-अलग से रकम यहाँ पे मुख्तस की है। उसके बाद है शेड्यूल मैनेजमेंट। शेड्यूल मैनेजमेंट में हमारे पास डिलीवरीज़, माइलस्टोन्स या मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ को जो वो प्लान किया जा रहा होता है, देखा जा रहा होता है। इसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट और उसकी एंड डेट, उसकी ड्यूरेशन और उसकी रिसोर्सेज़ को डिटरमाइन करते हैं। तो इस सिलसिले में जो हमारे पास मोस्ट मोस्ट पावरफुल डायग्राम जो हम यूज़ करते हैं वो है प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम। तो इसमें हमारे पास एक टास्क को करने के लिए 3 वेज़ हैं, और जो सबसे क्रिटिकल वे है वो टास्क 1 से टास्क 1 प्लस टास्क 3, यानी इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास 11 डेज़ आएँगे। तो ये है मोस्ट क्रिटिकल वे या पाथ। और इसके बाद है प्रोजेक्ट कैलेंडर। इट टेल्स अस व्हेन प्रोजेक्ट विल टेक प्लेस। ये हमें बताता है कि प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, कब ये एंड होगा। और इसमें हमें जो कि मुख्तलिफ़ तरह की हॉलिडेज़ आ जाती हैं, उनके बारे में भी हमें बताता है। और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है और ड्यूरेशन के बारे में हमें बताता है। इसके बाद है रिसोर्स कैलेंडर। अ ये हमें स्पेशली जो छुट्टियाँ हमारे पास होती हैं, जैसे डे ऑफ हो गई, सिक लीव आ गई या किसी भी कोई और तरह की छुट्टी उसमें आ गई, तो ये हमें उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। सपोज़ करें कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है 6 महीनों का, तो क्या हमने जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तमाम लोग हैं, यानी स्टेक होल्डर्स या हमारे अपने मेंबर्स हैं, तो उनके बारे में ये है कि वो कब अवेलेबल होंगे, किस डेट को अवेलेबल होंगे और किस डेट को नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ नीचे ये विंडो में हमें दिखाया भी जा रहा है कि ये बंदा यहाँ पे ऑफ है। तो मसलन अगर सपोज़ करें ये यहाँ पे ऑफ है, तो अगले दिन जब वो अवेलेबल होगा तो उस दिन उसको वो टास्क असाइन किया जाएगा। उसके बाद है ट्रैक प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। इसमें हम प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को टाइम वाइज़ और एक्सपेंस वाइज़ जो है वो देख रहे होते हैं कि आया कि हमारा प्रोजेक्ट जो हमारा प्लान था उसके मुताबिक जा रहा है या नहीं। आया कि हमारे पास जो फंड हमने इसके लिए मुख्तस किया था, वो इसी के अंदर कंप्लीट होता हुआ हमें दिखाई देता है या नहीं। इसमें हम एक्चुअल प्रोग्रेस को और प्रोजेक्टेड प्रोग्रेस को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। तो एक्टिव कोलैब हमें एक्सपेंस वाइज़ और टाइम वाइज़ दोनों के हिसाब से हमें ये उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनको ट्रैक करने के लिए एक फ़ीचर, ये दोनों फ़ीचर हमें दे रहा है। उसके बाद है रिस्क। रिस्क बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट में एक अनसर्टेन सिचुएशन को कहा जा सकता है। बेसिकली हमारे पास 2 तरह के रिस्क होते हैं। प्योर रिस्क जैसे कि जिनमें नेचुरल रिस्क आ गए, जैसे कि ज़लज़ला आ गया या तूफ़ान आ गया, जैसे कि आजकल कराची में आ रहा है। और या कोई अचानक किसी की डेथ हो गई, तो इसको हम प्योर रिस्क या नेचुरल रिस्क कह सकते हैं। और बिज़नेस रिस्क जो कि हमारे पास ज़रा कैलकुलेटेड वे में आ जाते हैं, जैसे टाइम, कॉस्ट और बजट, इनको हम बाद में किसी न किसी तरह एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्योर रिस्क है उनको एडजस्ट करना ज़रा मुश्किल है। तो वी हैव टू अप्रोचेस टू आइडेंटिफाई रिस्क। हमारे पास 2 अप्रोचेस आ जाती हैं, एक है ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक है डेल्फी मेथड। ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये है कि
हम तमाम जो मेंबर्स हैं वो आपस में मिल बैठते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की मीटिंग कंडक्ट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और मुख्तलिफ़ तरह के जो रिस्क उनको आइडेंटिफ़ाई करते हैं। और दूसरा डेल्फी मेथड, इसमें जो वो सब लोग मिल के एक ही बंदे को नॉमिनेट कर देते हैं, जो कि और उसको जो बंदा नॉमिनेट होता है वो फिर तरजीही बुनियादों पे जो रिस्क को आइडेंटिफ़ाई करता है। तो रिस्क एनालिसिस की भी 2 टाइप्स हैं, क्वांटिटिव, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिस्क रैंकिंग व्हिच इज़ बेस्ड टू आइडेंटिफाई रिस्क, लेकिन ये विदिन ए प्रोजेक्ट में होती है। और क्वांटिटिव रिस्क एनालिसिस जो है वो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग रिस्क एक्सपोज़र व्हिच इज़ बेस्ड ऑन क्वांटिटी वाइज़, यानी क्वांटिटी वाइज़ हम इसके रिस्क को मेजर कर रहे होते हैं। तो एक्टिव कोलैब हमें एक डैशबोर्ड या विंडो दे रहा है जिसमें हम मुख्तलिफ़ तरह के रिस्क जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसमें हमें मुख्तलिफ़ तरह की इनपुट फ़ील्ड्स दी गई हैं जिनमें हम अपना डेटा इनपुट करते हैं और जो कि बैकएंड पे हमारे पास स्टोर हो रहा होता है। सो कंक्लूजन इसका मैं कुछ इस तरह से करूँगा कि नो डाउट एक्टिव कोलैब एक बेहतरीन टूल है। इट्स मच हेल्पफुल इन 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 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेकिन इसमें कुछ लैग्स हैं, कुछ कमियां हैं। सपोज़ कि ये ओवरऑल यानी हायर लेवल पे तो चीज़ों को मैनेज करने में बहुत मावन और बहुत अच्छा साबित हो रहा है, लेकिन जब हम इंडिविजुअल बेसिस पे आते हैं तो ये हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं करता, उस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होता कि किसी भी इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक करने के लिए इसमें ये थोड़ी सी कमियां पाई जाती हैं। बट ओवरऑल इट्स अ गुड टूल अगर इसमें इसको और अपडेट कर दिया जाए, और इसमें इंडिविजुअल लेवल पे भी ट्रैकिंग जो वो ज़रा इफ़ेक्टिव हो, ज़रा बेहतर हो, तो आई थिंक इट्स एन आउट क्लास सॉफ्टवेयर। So this was our project, and thank you so much.